afternoon. Should we do it again? I'm absolutely thrilled and honored to be your host this afternoon. To all the MI Paltan joining us across the Mumbai Indian social handles and on Geo Cinema, welcome once again. Just some ground rules before we begin. The press conference is also being streamed on Zoom, so we request all the journalists joining us there to please send us your questions in the message inbox, and we'll try and take as many as we can. To everybody joining us here, I request you to please state your name, your publication, and to whom your question is being addressed. Another small request is to please keep the questions to the team and the upcoming season. All right. Okay, so we are less than a week away. The excitement is building up, and we have a lot to chat about with the two gentlemen who will be joining us. So without any further ado, I would like to welcome, first up, our head coach, Mr. Mark Boucher. Mumbai Indians. Mumbai Indians. Mumbai Indians. हम लगाएंगे. Mumbai Indians. जान लगाएंगे. Mumbai Indians. जलवा दिखा देंगे हम. Mumbai Indians. लोहा जला देंगे. पानी जला देंगे. दुनिया हिला देंगे हम. दुनिया हिला देंगे हम. Welcome, Mark. All right, and next up, a bit of a homecoming of sorts. Please welcome our captain, Hardik Pandya. Mumbai Indians. Mumbai Indians. हम लगाएंगे. Mumbai Indians. जान लगाएंगे. Mumbai Indians. जलवा दिखा देंगे हम. Mumbai Indians. लोहा जला देंगे. पानी जला देंगे. दुनिया हिला देंगे हम. दुनिया हिला देंगे हम. All right, gentlemen, thank you so much for joining us. This is going to be a season of old new faces. You know, Captain Pandya, welcome back. Slinga Malinga is back. Jasprit Bumrah is back. Lot to celebrate for the OG Mumbai fans, and we're super thrilled and excited. Just one thing is remaining now, so no pressure. All right, Mark, I would like to begin with you up first. I consider myself a huge Mumbai Indians fan, and just like me, a lot of fans out there want to hear from you about a lot of things. First up, it's a new and promising season ahead. Lots of new faces in the dressing room. So just want to know the key factors that you have focused on in the lead up to the season. Yeah, first of all, I think it's just about getting to know the new characters within the dressing room as well. Trying to define different roles for each and every person. I think that's important, so they come into the setup and they know exactly how and where they fit in to the combinations that we want. Thankfully, there's been a lot of cricket that's been going on, so the guys have played a lot of cricket, so we feel that we're in a very good position at the moment from a player's perspective. The guys have been in good form as well. Obviously, there's injuries that you have to manage the entire time as well, which has been something that we've been looking closely at, and we've got a good medical team to be able to look after that as well. So, yeah, we're just trying to sort of give direction to the whole squad about how we want to play, the brand of cricket that we want to play. And I think we're in a good space at the moment. We've got a big start today. We've got our first warm-up game. And then 2 days later, we've got another warm-up game. So looking forward to a couple of the players putting up their hands for those final selections. Awesome. Also, Hardik, firstly, welcome back. Aapka Hardik Swagat hai. You know, it's absolutely unreal to see you back in the blue and gold. You know, this is where the journey began for you, all the success, all the adulation from fans, all the hard work. What does it feel like for you to be back in the blue and gold in Mumbai and at the Wankhede? See, first of all, it's very good to be back. As you mentioned, it is back where everything started. It is a very surreal feeling for me because everything I have known from day one, from 2015 to now, has been through this team, through this journey. Knowing that my whole life changed when I made my debut in 2015 to now, the journey has been a very dreamful journey. Never thought I would reach here, but very, very grateful to be back here, playing in a ground which has been my favorite ground from day one, and at the same point of time playing for my favorite team.
That's awesome. We are all super thrilled and excited that you're back. I would now like to open the floor to questions from everybody present here. Like I mentioned, please do mention your name, your publication, and to whom you're addressing the questions. Sorry, can we Can you give give him mic by any your- chance? Thank you. I wanted to ask Hardik, you played all your career under Rohit. How different will this be that he's in the team where you are the captain? While we know that he's still the India captain, is that any different? Is that a little more complicated? First of all, it won't be any different because he's going to be always there to help me out if I need his help. At the same point of time, you mentioned that he is the captain of Indian team as well, which helps me because this team, what it has achieved under his belt. And from now onwards, it is just going to be what he has already achieved. I just carry forward that. So I don't think it will be any awkward or anything different. It will be a nice feeling because we've been playing for 10 years. I played whole my career under him, and I know he's gonna have a hand on my shoulder always throughout the season. Hardik, this is Devendra Pandya from Indian Express. I have two questions for you. Are you going to bowl this season? And how did you deal with the backlash after Rohit Sharma was appointed as the captain? The fan was completely against you, and they took on social media and expressed their outrage. First of all, the bowling bit, yes, I will be bowling. The backlash bit, to be very honest, we respect fans, everything, but at the same point of time, we focus on the sport. I focus on what is required. I control the controllables. I don't focus on which I can't control. And at the same point of time, we are very grateful to fans. I think a lot of things, a lot of fame, a lot of name, a lot of love comes from them. And they have every right. I respect their opinion. At the same point of time, very excited and going to focus on the sport. Hardik, this is Vijay Tagore from Crickbus. I wanted to ask you that it is Rohit will be putting hands on on your shoulder and guiding you. But have you had a chat since the change has taken place with Rohit? Yes and no, because he's been traveling, he's been playing. We all are professionals. By the time the team comes together, we've been playing cricket. So it's been only a couple of months since we have not seen each other. And as mentioned, whenever the IPL starts, which is from today onwards, we are playing a practice game. Once he comes, we'll definitely have a chat. Hi, this is Ananya Gupta from PTI. I have two questions for you. Hardik, how are you looking forward to a new role in Mumbai Indians as the captain? And secondly, you're back after an injury. How are you feeling, and are you feeling 100% with the bat on the ball? Your first question was that how do I feel coming back to Mumbai Indians, right? Yeah. Captain, obviously it feels wonderful. Who would not? My very journey started from here. Never thought 10 years down the line I'll be leading this side, and the feeling is way too amazing. Very excited for the season, very excited to play with all my old fellows who have been playing and kind of got a lot of success together. And coming back to the injury bit, my injury in World Cup was a freak injury. It had nothing to do with my past injuries. It had nothing to do with my fitness. It was just, I tried to stop the ball. I twisted my ankle. It went. Now, I would like to put it across here that I could have been back in 1.5 months. But when I got injured, my injury from day one only showed that I'm going to be out of the World Cup. But because I did not want it to, playing for India has been always special, and especially in the World Cup format. We pushed 10 days. We knew that it's a very difficult uphill task to reach and kind of be fit for the World Cup semi-finals or finals. When we pushed, I kind of triggered my injury more, and my injury became little more longer. And coming back as well, when I got fit,
the Afghanistan series just got, like, it just started. So I've been fit since then, but yeah, it's just that I've not played. There was no games to play for. Hi, Amol Karadkar from The Hindu. I have two questions for Mark and one for the captain. Mark, to begin with, there's so much of change in the makeover of Mumbai Indians from what it was last year. Not just the captain, even some of the seniors coming back. How much has it changed the pre-season preparations? How confident does it make you as a coach for regaining the title? No, I think it's changed. Obviously it has changed, as you said. The dynamic has changed a bit, but with change, it brings new challenges, new perspectives, which is always good, and a little bit of freshness as well. We've got a new batch of players coming in as well, and who are eager to learn. And some of them their first time that they're coming into the IPL as well. So they're very energetic, which is always good. So I think it's we set up for a good season. Obviously, we want to start off well, and that's where my focus is at the moment. Is, as I said before, getting everyone going in the right direction, giving different role clarity to different players. But I think we're in a good space at the moment. We've had a history of maybe not starting off too well, so we've addressed that as well. And we hopefully we found one or two things that we feel that we can do within the squad to make us more ready for that first game and hopefully get off to a good start. Not putting pressure on the players at all. If we get off to the normal start that we've had, then so be it. That's fine. We'll just have to catch up a bit. But hopefully the measures that we've put in place over the last sort of week and the few days to come is going to put us in a very good space to start the competition nice and strong. Right. Still, some things never change. Fitness updates being one. Can we have an update on Surya and Madhusanka? Yeah, so Surya at the moment is under the guidance of the Indian cricket team as well. So, we're just waiting for updates on that. I don't like to micromanage. We've got a world-class medical team that's in control of all of that. Yes, in the past we've been hampered by a few fitness issues. We're always going to be in that sort of domain of having fitness issues, as other teams are as well. Every time I look at my WhatsApp, there's reports of other teams also losing players. So, yeah, we trust our medical team that they're doing the right things. And look, if we lose one or two from fitness perspectives, it is what it is. That's sport, and we just have to keep on the right track and try to find replacements for that. Thank you. And Hardik, not just you or your team for that matter, this T20 World Cup is even more important, especially for Indian cricketers, considering there are so many slots still appear to be open when it comes to T20 World Cup. How do you as the leader ensure that the players in your group can stake a claim deservingly, but not at the cost of losing out on priorities, that is to achieve Mumbai Indians what they want? See, on this lines, I have a very firm belief that you should be playing for the team which you're playing for. Everyone can have goals, everyone can have ambitions to play for the country and for whichever different teams as well. But being honest and being true to your team is the most important thing for me. So for me right now and towards my boys, the focus will be the IPL. Will be to make sure that we serve Mumbai Indians the bestest of our ability. And in that process, if someone's having a claim or someone gets a chance, I would be very, very helpful. But we're not going to focus on the selection bit, that if someone can make it or not make it. That goes into a selfish arena. I don't believe in that. We play for the team, and it is one team. Hardik, this is G. Krishnan here, front row. Here. Hi, sir. Yeah. So, Mumbai Indians have won 5 titles under Rohit Sharma. You have we have led Gujarat Titans to victory in the first season. How easy or difficult is it going to be to live up to the expectations of the fans and the franchisee to win the 6th title? And to Mark, last year it was Rohit Sharma, this year it is Hardik captain. So, different captains, how are you handling them? See, expectations would be there with Mumbai Indians always. But I'm a very firm believer that in certain areas, especially managing expectation, you should focus on the process, right? Because I can't win the IPL tomorrow. I still have to wait a couple of months down the line. So
what can I do in those couple of months as a group is how we prepare, how we look after each other, how we create our brotherhood, how we make sure that we know each other in and out, from knowing our families, what are we up to, because that kind of helps us to achieve the expectations which everyone has. Yeah, we can only promise the results are something which are, I think, never in anyone's hand. But the only thing we can promise is that we're going to play a brand which everyone will enjoy, and at the same point of time go out there and kind of push our boundaries as well. And I think that is more exciting, and I'm very, 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 very excited and very looking forward to that kind of approach from all the boys. So it will be very exciting to play. To answer my question, yeah, last year had its challenges with regards to our injuries at the beginning of the season, and obviously working under Rowe was fantastic. I really enjoyed that. This year is a new challenge, working under a new captain as well. I've been a cricketer. I've played under different captains. I've played under different leadership coaches with different players. And as I said, it's great for me to be able to be in this situation to get different perspectives and challenge me in different ways as well. So I've got no doubt that, Rowe challenged me. Hardik's going to challenge me as well. I'm really looking forward to that challenge, and hopefully try to help him out as much as I can, and get everyone going in the right direction to ultimately, the reason why we're here is to try win a trophy. So if we can do that, I'm going to support the captain as much as possible. Yeah. Can you hear me? Vishwanath from News18 Chronicle. Hardik, it's exactly close to 5 months before you went down in that Bangladesh match, October 18th, 2 days from now. Tomorrow it's 19th. The first time after the lower limb problem, back problem, you played almost all the matches for the Titans. How did you feel playing the DY Patil? And does your body tell you that you can push yourself to play all the 14 league matches for Indians this time? DY Patil has been a wonderful tournament for every international cricketer or any other participant, because it kind of challenges you, and it is closest to IPL as well, kind of the competition to everything. Coming back to my injury bit, I have no issues with my body. I plan to play all the games possible, because in IPL I don't think I have missed many games anyway. As you mentioned, it's been 5 months of injury, because the last 2 months there was no cricket played. So technically I was out for 3 months. And yeah, that's my answer, sir. In fact, I'd just like to jump in, Hardik and Mark both. Mumbai Indians has always been known as a franchise that finds the most amazing young talent, hones them, and turns them into superstars. So just want to know, with the new young players that are there, what's it like in the dressing room? What is the process that you follow with the young players in a way that they can go out there and shine the best? I think first of all, credit's got to go to our scouts. They do a lot of work in the off season. So there's a whole process that they follow. So a lot of credit's got to go to them for, first of all, finding the players. We can trust that when it comes to the auction, we get put in a few names in front of us, and we can, some of the players I've never seen play before, but I trust that the scouts have seen them, and we back their decisions as well. So any youngster who comes in is going to be talented. We've just got to try and find, as I said, keep mentioning role definition for each one of these characters. Some of them might come in, not with the thought of playing them immediately, but maybe just sort of blooding them in. A lot of the players and the great stars that you see in this Mumbai Indians team at the moment have come from a very young age through the whole scout system as well. So there's definite advantages to that. And as you'll see in our system at the moment as well, and in our squad, there are a lot of exciting, young, promising players. Last year was Nahal Wadera, who got opportunities and really performed well. This year we've got a couple of players as well. Don't want to give too much away, but we've got a couple of players that hopefully can, if given the opportunity, then they can come and hopefully be the next superstars for not only Mumbai Indians, but also for Indian cricket. Hardik, like you mentioned, you were also one of the young players coming in 2015, and now you are the captain. Is there any advice you received during your younger days that resonated with you, and that you sort of would like to share with the rest of your team, especially with the younger lot? See, it is simple. My brother gave me that advice, and it was easy just to be myself, because there is always a sense of belonging question happens to the youngsters, anyone who comes to this stage. It's a massive stage.
so many people, so many eyes on you. The only questions keeps popping in your head that do I belong here? And when I was in the same lingo in 2015 and 16, asking this that am I not? What is happening? And I think my brother told me that, you know what, you are good enough to be here. That's why you belong here. And yeah, from that time onwards, I always focused on making sure that I enjoy the sport. And exactly same thing which I want from all the youngsters. Come and enjoy, be yourself, show your character, what you are made of. And yeah, we're gonna be there, Mark, and we have wonderful support staff. We're all gonna be there to help them to kind of make sure they achieve and they prepare in the bestest ability and achieve a lot of greatness in their life. Speaking about the coaching staff, the original gang is back together. Karen Pollard, Lasit Malinga. So what's it like to come back and seeing them in different roles? You played so much of your cricket at Mumbai with them. So what's it like being back together with the both of them? Very excited. Obviously, when I played with them, I shared a very good bond with both of them. And now, one being bowling coach, one being batting coach, it is little surprising, but a very warm and very happy surprise that people who I enjoyed playing, who are legends of the sport, are there to help me. And obviously Mark leads them, and Mark has been fantastic from his standpoint of how clarity point of view to backing and everything, which has been wonderful. So overall as a group, it's been fantastic so far, and I'm sure it's going to be more even better going forward. Amazing. All right, so we'll be taking some questions from the journalists here. Yes? Hi Hardik, I'm Rohan from the Free Press Journal. Firstly, welcome back to MI. Thank you. Very happy to see you back. Thank you. I have two questions for you. Firstly, we were hearing rumors that there was a captaincy clause in your contract. Okay. So second question would be, how challenging will it be to play this IPL in two phases this time? Is it in two phases? Schedule is not yet out, so I don't know. I can't comment on that. Hi guys. Hi. Okay. Hi. So good afternoon to both of you. My name is Dr. Good afternoon. Pradyumna Timbekar. I'm from Red FM. My question is to Mark and Hardik both. Mark, I'll start with you first. You've seen Hardik the player, we've seen Hardik the captain, we've seen Hardik in the lead role. How much of excitement would you like to see from the dugout when it comes to the fact that he'll be, like the Hardik, the all-rounder, like what's that perspective like? And Hardik, my question to you is, I've worked as a team doctor and a sports psychologist in various sports as well. I've seen your team. You've won championships together, and also there's been a phase where Mumbai Indians had a dip as well. This topsy-turvy ride. How much time psychologically would the team require to set into that winning momentum again, given the fact that you won 5 championships as well? And how much of a significant impact you can provide, given that now there are team leaders? So how much addition would that point out from a psychological point of view? My question first on Hardik. Look, I didn't ever play against Hardik, thankfully. I think myself and him would have had quite a war out in the middle. He likes to stand his ground, and so do I. But yeah, I mean, it's watching him in the IPLs, playing for India. I mean, you can only be in awe of the all-rounder that he is. He always wants to get involved in the game, whether it be with the bat or with the ball. What's great for me is that he loves the pressure moments as well, and he's done really well. He's excelled. Winners create winners, and he's won trophies for MI. He showed that he went to Gujarat and he won trophies there as well. So to have him back in our setup, it's only going to strengthen Mumbai Indians. So I'm very excited to have him sitting in the dugout, pick his brain. As I said earlier, different perspectives, different challenges, and I'm really looking forward to it. And as I said, our support staff will support him as much as he wants us to, and hopefully something comes of that. We're not going to put too much pressure on each other. I think if we do the right processes, the outcome will take care of itself. So very happy to have him sitting in our dugout. I don't want to see him in the dugout too much. I want to see him out in the middle, because that means that we're doing well. My answer to your question, psychology, how it makes difference. See, winning and losing is part of the sport. We all have to accept that, and I think we all have accepted as well, that someone's going to lose, someone's going to win.
But something which is very important is that how do you stay neutral? Because that is important. As you mentioned, that sometimes losing can take you down and winning can take you up. But what I have believed in whichever team I have played, or even myself, that I don't take myself up in success, I don't take myself down in failures. So in that process, what happens, I'm able to be more consistent with my approaches, with my formulas, or with my intentions, because there is not much fluctuation happening going up and down. And I think that has helped me big time in my sport and my career and just the teams which I have played. And coming back to, we have won 5 times, and obviously there is expectations and all. But the same answers to it takes time, it takes process. It's not a magic wand everyone has that shakalaka boom, 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 we won the trophy. It is something which takes time, a right effort, right intentions, caring for each other, having sympathy and empathy for each other. And all these parts for me are very important and very crucial. And if we manage to get all them together, I think we'll be on the right track to achieve something which we all want to do. Mark, over here. I just want to know that what was the one reason that made the management decide that Rohit should not captain the Mumbai Indians and Hardik should captain the Mumbai Indians? No, I'm asking Mark about. Hi, Hi. I'm Karen from OTT Play. 2 questions. The first question anyone can answer. With the World Cup coming up, and like Hardik said, injury can happen anytime. What is the player management going to be with leading to the World Cup? Are you all going to keep replacing players, especially the World Cup bound players? And Hardik, how was your welcome in the MI team? I think, let me answer from the players' management perspective. Obviously, my job is coaching Mumbai Indians. I'm no longer a coach of an international team, so I'm going to be a little bit biased and say that, we'd like our best players to be playing at all times. However, I have got a soft spot for the players, and no matter what happens, we always look at the player first and have his intentions at heart. So, we're not going to go out and play a player for the sake of playing him, knowing that he's going to get injured. I understand the professional world of sport today. There's certain players who might be carrying niggles. That's why I lean on my medical team to give me good advice of whether we can push a player or whether it's not a good idea to push a player. So we'll always have that interest of the player at heart, but hopefully we can keep them on the field. And bottom line is, sometimes you just got to back the player and ask the player how you're feeling. If he's not feeling up to it, there's enough honesty in our dressing room that I think he could come and chat to me and say, listen, coach, I'd like a break here. Or he might say to me, listen, I don't want to have a break. Sometimes you've got to fight that with the player as well, where the medical team say one thing and the player says the other thing. So it's a relationship and the trust that you form with your team and your team members, and also the medical team that make that decision. My answer has been, it's been amazing coming back, being in where I live as well. Again, coming back to where it all started, and now the journey is going to continue. So very, very excited, very happy. The welcome was wonderful. It was very warm, and it was very emotional. And 2 years back, never thought we'll be back here, but I am. Hardik, this is Gaurav Gupta from Times of India. Hi, brother. You've had a few injuries in your career. So, can you describe this phase? You went out in the middle of the World Cup, which must have been very tough on you. And then from there to getting the MI captaincy and all that was said on social media. So, can you take us through that journey a bit? That how was it? This. See, when I got injured, when it happened, first of all, when it happened, I had no clue how bad it is or how good it is. When I went to the scan as well, initially it just showed, because when I twisted my whole ankle, it just showed that it's just a little niggle, which would be fine. But as couple of hours progressed, it showed the real picture where my ankle became like a big ankle. And in that process, straight away next day I went to NCA to make sure that I fasten my processes and make sure that I come back. Again, we tried every day, making sure that we are available for the World Cup, and we had to take a call after 12th day where I had a reoccurring again, where my injury kind of expanded more.
And the question was that, do I want to represent India at 50%? The answer was no, because India deserves better than that. And I myself will not be able to justify the fact that I'm coming not completely ready. And from there, obviously, this journey started of my rehab, and the whole process the focus was only to make sure that I come back as soon as possible. But with injuries and with something like a freak injury which I had, in that you need to give time, because it is not something which goes away in mobility or it goes with physio helping you. It is just natural body recovery which you need to do. And obviously then the whole MI thing came, me coming back. It was more exciting time. I was sitting at home training and working hard. This news came, which was even more special. So yeah, since then it is just the journey has been going on. All right, one final question before we move on to the fan section. Yes? Hi. Hardik, one question to you about Mumbai Indians. I mean, from the time you went and to time you came back, how much has the complexion of the entire squad has changed? And one question, how much has the complexion of the entire Mumbai Indian squad has changed from the time you left? And one question to the coach, given the way Cameron Green was shaping up, having joined the squad last year, having played quite a few innings which were kind of impactful, and not having him around this time, how much change would you be forced to make in terms of the whole squad composition? See, obviously it's been 2 years, this is my 3rd year by the time I come back. A lot have changed. As he mentioned, coaches have changed. Players are only my 4-5 core people who I used to play are the same people who are here. So even this is also a little different, but the name remains the same. So the emotion and the love remains also the same. So it is different, but I think we all are getting used to it, and yeah, looking forward for it. Awesome. All right. Thank you so much. Sorry. I'm so sorry. With regards to Cameron Green, yeah, so that's the beauty of the IPL is that the auction it changes dynamics of a lot of different teams and seasons. And Cameron Green had a fantastic season for us, and I think the way that he played, the exciting brand of cricket that he played was great from our perspective. As I said, auctions change, and you know, we had a couple of holes in our team that we needed to fill up, and unfortunately we had to, you know, we went with the decision to let go of him. But we've selected along the lines of looking at players that can hopefully fulfill that role again. We've got a couple of options available to us, and hopefully that guy can come in the big shoes that Cameron did have and fill them with flying colors. So yeah, Cam did have a great season for us, but we have earmarked 1 or 2 players to fulfill that. All right, thank you so much. I'm now going to move on to a very special fan section. We have our MI Paltan, who's also tuned in from across the world, and we've shortlisted a few questions that have come in for you guys. All right, let me just open it. All right, so the first question we have is from Hitanshu Jadhav 19. His question is to Hardik, good to see you back in Mumbai. Can we see our vintage hitter Kung Fu Pandya back in action like the old days and winning matches? Yes, the roles have changed. I'm back to what I've done throughout my career, and looking forward to that role, and I'm going to make sure that I do justice to all the expectations which people have, and yeah, very excited. All right, next question is from Crazy Johns, and he's asked, he's like, in what role will we see Hardik this season? You've played in various roles at various batting positions, so what role can we expect to see you in the IPL this season? This IPL, obviously, I'll be all-rounder. And I'll try to finish as many games possible, and you know, I'll be there down there making sure that I hit as many runs possible and enjoy the position which I have always loved. Awesome. All right. Next question is from Parag_Manpe, and he's asked, either of y'all could answer, is, will MI win their opening game this season and break the jinx? As I said earlier, we've addressed that. We understand that we haven't started off well in the last few seasons. So more than a few, I've just been reminded. We've addressed that issue.
if he's got any ideas on how to solve that, please, I'm more than willing to listen to him. But we've put one or two things in place that we think might be the change. I don't want to put any pressure on the players. Hopefully it works for us. If it doesn't work for us, then we're just back to the good old usual. We're going to have to play a bit of catch up. Awesome. All right. And the final question is from Tahu_FCC. And his question is, with the new roles being recruited and new big additions to the side, how has the approach to the new season changed from the previous years? I don't think it's changed immensely. As I said, with Hardik coming in, a couple of new perceptions on how we want to play. I think last year we showed signs of the sort of brand that we want to play, which is very exciting to me. As I said, we had a couple of injury concerns, but this year we look like we're in a good place with regards to all the players and characters that we want to play a certain sort of brand. So I think the fans can expect a nice positive brand of cricket, and we want to allow the players to really go out there and express themselves, because we've got some immense talent within our squad. And I think Hardik's the type of captain who's going to take that on board as well, and he's a nice aggressive player as well. So I'm sure that every member within the team that walks onto the field is going to feel like they can go and win a game for us, and we're going to try allow them to go dominate that space. Awesome. All right. Now we are going to move on to something special, something fun with the journalists sitting in the room. We wanted to do, sorry? Oh, there's more questions? All right, we could take some more questions. Hi, Hardik. Nikhil from ETV. Hi. One of you can answer. How openly will Rohit play as a batter in this season, considering he doesn't have any captaincy pressure? And is this an added advantage for Mumbai Indians going into the season? I think Rohit's in fantastic form. I've been watching the games against England, and the way that he's hitting the ball, these movements into the ball are fantastic. So I'm really looking forward to Roh going out and really expressing himself, as you said, without the captaincy on his shoulders. I think, all of us in Mumbai Indians are really excited to see him go out there and have a fantastic season for us. If he has a great season for us, we're going to be in the dying stages of the tournament, which is, I think, what we and the fans want. Hi, Hardik, welcome back to Mumbai Indians. Thank you. After the transfer, did you have a chat with Shubman Gill about kind of passing on the baton about G? Hardik, hi. Hi. Yash from ESPN Cricket Info. One thing MI missed last season, your coach would probably agree, was the services of Jasprit Bumrah. He's back. He's had a crazy run of form from the World Cup, the England series. How big a shot in the arm is it for the team on the whole? And how much of his role do you see as part of your leadership group, given that that's also a role he's taken on? And the question to the coach is, do you have a gauge on who your overseas quartet is likely to be? Speaking about Jassi, Jassi has been a #1 bowler for a long time. He's been a champion cricketer. Yes, last year they did miss him. This year we are fortunate that he's available and firing with all cylinders. And yeah, he's definitely going to be one of the leaders who's going to make sure that he guides all the bowlers, because the kind of experience and the knowledge which he has. So looking forward for all that, and especially very excited to have him back with full throttle, and at the same point of time helping the youngsters, because the kind of knowledge and ideas he has, and it's not just he throws them, he has done that in reality as well. So a lot of people can take inspiration from him and make sure that they kind of replicate what he does. It's very difficult, but we can still try. With regards to the overseas quartet, I mean, if you have a look at all the players that we've selected, we've got plenty of options. So I think that this season we can choose condition related. We'll have a look at and see which players best suit different conditions. The nice thing about our team is, and the squad, is that we've got a lot of very, very good local players to choose from. You have a look at our batting lineup on paper. It's largely an Indian cricket team batting lineup. So that's a big advantage for us as well. There might even be situations where we only go in with three overseas players without giving too much away, and maybe have one or two options as impact players on the bench. And as I said, have a look at the conditions, see what's best going to suit us. So we are blessed in that regard, that we've got a lot of very good local Indian players. Hi,
Question for Mark, but Hardik can also answer. This is Kumar Sham from Al Ittihad, which is an Abu Dhabi newspaper. MI Emirates, which is your other franchisee, won the local league there. There's a lots of ifs and buts to this question, but just in case that the IPL gets moved out and goes to the UAE as it is being presumed, do you think there will be an added prize on your team to be the one to be beating? Sorry? Yeah, just in case. That's above my pay grade. Hi, my name is Rohan. I'm from 94.3 Radio 1. Firstly, I'd like to say it's an honor to talk to the both of y'all. And I just wanted to start off with Mark first. Mark, does Hardik remind you a little of Jack Carlis? Because you played with Jack Carlis, he's a great. And Hardik is also one of the best all-rounders we've had in the recent few years, decade maybe, the recent few years. Second question is, how is the relationship between Nuwan and Malinga in the camp, since they're both similar bowlers? And my last question to Hardik is, Hardik, you've been a really successful top order batsman in the last 2 seasons, and you've been one of the best finishers in the world, and you've been one of the most amazing bowlers as well, bowling really, really well. So what's your favorite role amongst these three? Sorry, that was too long, but I'm done. Thank you. Okay, your first question, does he remind me of Jacques Callis? He's got a lot more hair than Jacques Callis has. So that's a positive. His hair's going in the right direction. Look, Jacques is a fantastic cricketer, if not one of the greatest all-rounders that has ever been produced. And he's a good close friend of mine as well. So Hardik, even to be mentioned in Jacques Callis' breath, I think, he'd look at it and go like, yo, I've achieved something in life. So having a look at Hardik as an all-rounder, he can win you a match with the ball and he can win you a match with the bat. So we are very privileged to have him at Mumbai Indians as well. And it's, as I said before, I'm really looking forward to him challenging me and me challenging him in our relationship. So I'll probably be able to answer that once I've spent a bit more time with him as well. With regards to Nuwan and Mali, they come from the same country, they got the same action, so it's a match made in heaven, really. The conversations that they have, I can't say I understand them because it's in a different language, but I see the perfect coach for Nuwan. We first saw Nuwan, I first saw him in Abu Dhabi, and I was really surprised with his action and the way that he was delivering balls. So he's got that X factor about him, and who better to look after him than a guy he's probably looked at his action and tried to copy. So I think they're both in a very good space. My answer, what do I enjoy the most? See, I always have extra love for batting, and especially when it comes to finishing games has been even more special. So I'll keep it short. Something which I love is batting and finishing game. But the biggest happiness I get is when I play as an all-rounder. Okay, that was it from the questions from the room here. We are now going to move on to do something fun with all the journalists present here. We're going to do a little bit of a Mumbai Indians quiz with y'all, and you stand a chance to win some hampers. So if you guys don't mind, we could just about start that. I'm going to ask you a bunch of questions. If you guys know the answer, please raise your hand and you'll be getting a mic. Okay, so first question is, how many times have MI won in T20 leagues? All right, Rohan? Sorry, 9? No. That's correct, 10. That's the right answer. Across T20 leagues, Mumbai Indians have won 10 times. Okay, now next question is, when did Hardik Pandya make his debut for Mumbai Indians? What year? Yeah, you kind of gave the answer in the beginning. All right, next one is, who has hit the most number of sixes for Mumbai Indians in the IPL? That's right, Karan Pollard is the right answer. Okay, next one is, who was the player of the final when Mumbai Indians won the title in 2019? Yes, you write that?
No. Who was the man of the match in the 2019 final, which was one of the most fantastic games ever played? It's Bumrah. That's right, it was Jasprit Bumrah. And the last one, the last question is, who was the player of the match in the first IPL match that Mumbai Indians played? That's correct. It was actually Mark Boucher. Yes. Again, for RCB, he scored 39 not out and was a match-winning innings. Did you ever think then that you would be coaching? All right, that was it for the quiz. Thank you so much for your participation. We would now like to do a little bit of a ball signing. If you guys don't mind, can we have and some pictures? Yeah. We're going to open it up for some pictures. Mumbai Indians. Ala re, ala re, ala re, ala re. Mumbai Indians. Mumbai Indians. Dum lagayenge. Mumbai Indians. Jaan lagayenge. Mumbai Indians. Jalwa dikha denge hum. Mumbai Indians. Loha jala denge. Pani jala denge. Duniya hila denge hum. Duniya hila denge hum. Ab duniya hila de hum. सागर पे हम, सड़कों पे हम, पटरी पे हम, गलियों में हम, आफत में हम, राहत में हम, अपनी ज़मीं की चाहत में हम, ज़मीं की चाहत में झंडे उड़ा देंगे, झंडे छुड़ा देंगे, जलवा दिखा देंगे हम, दुनिया हिला देंगे हम, अब दुनिया हिला दे हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम, मुंबई इंडियंस. Mumbai Indians. Ala re, ala re, ala re, ala re. Mumbai Indians. Mumbai Indians. All right, if you don't mind, we would just request you to do one selfie with this and with all the journalists who are present, if you don't mind. Yeah, we could do both, if that's okay. Guys, they are getting a selfie with Hardik and Mark. Awesome. And one with that background. And one small request before you go. The people who got the answers correctly, if you don't mind, please coming up. We'd like to give you your winning hampers from the hands of Hardik and Mark. Only those with right answers, please. Mumbai Indians. Mumbai Indians. Dum lagayenge. Mumbai Indians. Jaan lagayenge. Mumbai Indians. Jalwa dikha denge hum. Mumbai Indians. Loha jala denge. Pani jala denge. Duniya hila denge hum. Duniya hila denge hum. Ab duniya hila de hum. Sagar pe hum, सड़कों पे हम, पटरी पे हम, गलियों में हम, आफत में हम, राहत में हम. All right, Hardik, all right, Mark, thank you so much for joining us. Thank you so much, Hardik. Thank you, Mark. All right, ladies and gentlemen, with that, we've come to the end of the pre-season press conference. I would like to thank all of y'all for taking your valuable time out and नया TVS Jupiter 125 SXE with Smart Connect. फिर से up, please. तो नया TVS Jupiter 125 SXE with Smart Connect. इसमें है SMS alerts, call alerts, score updates, weather updates और voice assistant navigation. TVS Jupiter, ज़्यादा का फायदा.
हम इस समय जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम के बाहर है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी जो रैली है यहाँ पे करने वाले हैं और इस रैली में तकरीबन 30,500 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं उनका वो इनॉग्रेशन करेंगे या नींव पत्थर रखेंगे। आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक डिसीजन आया 370 के ऊपर, उसके बाद उनकी ये पहली विजिट है जम्मू कश्मीर में और जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। जिसको बता दूं कि जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि जब पिछली बार जब जम्मू कश्मीर आए थे, वो पाकिस्तान की तरफ से एक षड्यंत्र रचा गया था और सुंजुआ में यहाँ दो जो टेररिस्ट है उनको मार गिराया गया था, जिनका कि बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनका जो टारगेट था वो प्रधानमंत्री की रैली को अवरोधित करना था। और उसके बाद अब जो इस बार जब वो आ रहे हैं तो सुरक्षा के बहुत ज्यादा इंतजाम जो है यहाँ किए गए। आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ, पुलिस, जो सिक्योरिटी है, हर जो है सिक्योरिटी का जो है यहाँ पे मौलाना आजाद स्टेडियम के बाहर जो है पूरा प्रबंध किया गया है। बिल्कुल जो सिक्योरिटी है उसके पुख्ता जो है इंतजाम किए गए हैं, लगे हुए हैं। हर तरह के जो इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं। हर तरह की जो चेकिंग है वो हो रही है। सब जो स्पेशल इक्विपमेंट है, जो बॉम्ब स्क्वाड है वो भी यहाँ प्रेजेंट है और वो हर चीज की जो है चेकिंग वो कर रहा है। मोदी जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए उत्सुक है और बड़ी भारी संख्या में लोग वहां पर पधारने वाले हैं। और मोदी जी की इस सभा में जिस प्रकार से नए लॉन्चिंग्स, नए शिलान्यास और नए लोकार्पण का कार्यक्रम है, वो भी पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश के लिए एक उपहार के तौर पर रहेगा। और साथ ही साथ विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर को लेकर के लाभार्थियों के साथ चर्चा, क्योंकि मोदी जी ने एक नया क्रम शुरू किया लोगों तक स्वयं पहुंचने का, चाहे वो मन की बात के माध्यम से था, चाहे वो विकसित भारत की गाड़ी के लाभार्थियों से सीधी संवाद करने का था। उसका दृश्य हमें एक यहाँ पर भी उस दिन देखने को मिलेगा। कश्मीर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो है एम्स जम्मू, जिसका कि इनॉग्रेशन होगा। उसके अलावा आईआईटी जम्मू, आईआईएम जम्मू, इसका भी इनॉग्रेशन किया जाएगा। और बारामूला से संगलदान जो है रेलवे प्रोजेक्ट, उसका भी इम्पोर्टेंट जो है रेलवे प्रोजेक्ट, उसका भी जो है इनॉग्रेशन किया जाएगा। इसके अलावा कई जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं उसका भी नींव पत्थर डाला जाएगा और तकरीबन 30,500 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जो मोदी जी हैं यहाँ से उसका वर्चुअली जो है इनॉग्रेशन या नींव पत्थर रखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम के बाहर काफी जोश है लोगों में इस रैली को लेके। हमारे साथ जो बीजेवाईएम के जो लोग हैं जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं, जो यहाँ पोस्टर्स वगैरह लगा रहे हैं, जो झंडे वगैरह लगा रहे हैं और उनके जो बीजेवाईएम के प्रधान है वो भी यहाँ तैयारियां करवा रहे हैं, वो भी है। उनसे बात करते हैं। अरुण जी, किस तरह का जोश है यहाँ लोगों में? जिस तरीके से यहाँ पर नौजवान आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, कल ठीक 9 बजे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एमए स्टेडियम में आने वाले हैं। मौलाना आजाद स्टेडियम के बाहर का जो एक जोशो खरोश भरा जो आप सब देख पा रहे हैं माहौल बना है, देश के प्रधानमंत्री जी 370 जो एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग था जम्मू कश्मीर पर, जिसने यहाँ पर विकास यात्रा के सामने एक बहुत बड़ा रोड़ा लगा करके रखा था, आज जब वो हटा तो कितनी तेज गति से जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है, उसका शिलान्यास और विधिवत उद्घाटन करने देश के प्रधानमंत्री जी 20 तारीख यानी कल मौलाना आजाद स्टेडियम में आने वाले हैं। इसका जोशो खरोश आम नौजवान के अंदर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से देश का जो जम्मू का जो नौजवान है बड़ी मात्रा के अंदर कल यहाँ, और जिस तरीके से पिछले 10 वर्ष के अंदर 30,000 से अधिक के ये जो प्रोजेक्ट सिर्फ देश के प्रधानमंत्री जी
जो अभी जिनका विधिवत उद्घाटन करने आए हैं, और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास किया जाएगा। उसमें से मुख्यतः IIT, IIM, एम्स और जो रेलवे ब्रिज है और वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है उसका भी शिलान्यास किया जाएगा। और एम्स, IIT, IIM हो जो जम्मू के अंदर, जम्मू को बहुत बड़ी सौगात यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई। जब पूरे देश के अंदर केवल जम्मू एक ऐसा शहर है जहां पर इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूशन 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर बने हैं। हम लोग शुक्रगुजार हैं देश के प्रधानमंत्री जी के। और वहीं पर अनुसूचित जनजाति के रूप में पहाड़ी ट्राइब को, पहाड़ी के एथनिक ग्रुप को उसको मौका देना, और बैकवर्ड क्लास के अंदर जो इतनी देर से लोग परेशान थे, कोली समाज के, गधा ब्राह्मण, उनको भी मौका देना। और ऐसे समाज थे जिनको OBC को आज तक यहाँ पर मौका नहीं मिला, उनको मौका देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 370 अनुच्छेद को तोड़ने के बाद किया है। वहीं पर ग्रास रूट डेमोक्रेसी को सशक्त करना, BDC, DDC, पंच, सरपंच को एम्पावर करना देश के प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। और हमने पिछले 5-6 साल के अंदर देखा किस तरीके से ग्रास रूट डेमोक्रेसी को ग्रूम किया गया और आम नौजवान को जम्मू कश्मीर का मुस्तकबल तय करने के लिए जिम्मेवार बनाया गया। हम धन्यवादी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के। इसलिए आज नौजवान यहाँ पर उमड़ा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आना उनको कल है, बट आज ही कई खित्तों से नौजवान पहुंचे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने हेतु, धन्यवाद करने हेतु यहाँ पर पहुंचे हैं। हम स्वागत करते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को वो सब कुछ दिया जिसके लिए 70 वर्ष जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा अपेक्षा और उसकी आशा करते रहे। इसीलिए नौजवानों का विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ है और बहुत खुश हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। कुछ हम आम लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला से आता हूं, जो बॉर्डर का जिला है, और राजौरी से कई सौ की हजारों की तादाद में जो है वो नौजवान मोदी जी का स्वागत करने के लिए आज जम्मू में आया है। मोदी जी ने खास तौर पर बॉर्डर के एरियाज में ट्रिमेंडस डेवलपमेंट की है, चाहे वो बंकर बनाकर हो। आज जम्मू से लेकर पुंछ तक 4 लेन का काम लगा है। वहां के बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस देना हो, वहां पे जो पिछड़ा हुआ समाज था, चाहे गुज्जर बकरवाल हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे कोई और OBC का समाज हो, आज उनको मुख्य धारा के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ से आया हुआ जो नौजवान है वो आज मोदी जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर उमड़ा है। आज मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को एक टेररिस्ट हब से जो है वो टूरिज्म हब की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसीलिए आज नौजवान खुली बाहों से मोदी जी का स्वागत करने के लिए तैयार है। देखिए, मैं कश्मीर से हूँ, अनंतनाग जिले से। हम मोदी जी के लिए आए हैं क्योंकि हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल मंदिरों के शहर में जम्मू में आ रहे हैं, MS स्टेडियम में। हम उसको मोस्ट वेलकम करते हैं। कश्मीर में बहुत सारे युवा भी यहाँ आ रहे हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद जब से धारा 370 हटा, तब से शांति है कश्मीर में। तब से हमारा युवा बहुत अच्छी तरीके से रहता है उधर, क्योंकि यहाँ की जो रीजनल पार्टियां थी उन्होंने वहाँ पर हमारे नौजवानों के साथ खेला था। और अब जब से श्री नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाला है, जिस तरह से जो आतंकवाद था, आतंकवाद को किस तरह से खत्म किया, जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद चलाया जा रहा था, स्पेशली कश्मीर में। देखिए, आतंकवाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने खत्म किया है कश्मीर में। आज आप देखो, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ चुका है, डेवलपमेंट बढ़ चुकी है कश्मीर में। हमारे जो यूथ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने उनके हाथ में गन दिए थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कलम थमाया, लैपटॉप थमाया हमारे नौजवान के हाथ में। वेरी फॉर्चुनेट कि मोदी जी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। सबके लिए प्राउड मोमेंट है और साथ में काफ़ी उम्मीदें हैं मोदी जी से, और हम चाहेंगे कि मोदी जी अगली बार भी यहाँ पर आएँ, और हम तहे दिल से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि चेंज उन्होंने लाया है? चेंज तो काफ़ी लाया है। जैसे आप देखिए, आर्टिकल 370 से काफ़ी फ़र्क पड़ा है और युवाओं को रोज़गार मिला है काफ़ी ज़्यादा। और बस यूं ही उनकी सरकार दोबारा आए तो शायद और तरक्की हो पाए। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम कुमुद भारद्वाज है, मैं जम्मू से हूँ, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ। मैं यही बोलूँगी कि मोदी जी की सरकार के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिला एज अ
जम्मू निवासी। बहुत सारे लोगों को पेंशन मिली है, मेरी दादी है उनको भी काफी पेंशन मिली है, वो काफी खुश रहती है आजकल। और जितने भी मतलब युवा हैं उनको रोडवेज कितनी तरक्की हुई है और भी मतलब चेंज जो है वो देखी जा रही है। तो इसलिए हम सब जितने भी युवा हैं जम्मू के वो सब स्वागत करना चाहते हैं मोदी जी का, और हम चाहते हैं कि अगली बार भी उन्हीं की सरकार हो। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उसको कैसे रोक सकते हैं? वेलकम। और प्राइम मिनिस्टर जब कहीं आता है तो कुछ दे के ही जाता है, चाहे हम उनकी पार्टी से मतभेद हों, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब आता है किसी भी पार्टी का तो वो कुछ दे के ही जाती है। उम्मीद है कि हम अपेक्षा करता हूं कुछ दे के जाएंगे। बाकी स्वागत। हमारी तरह 3 साल पहले भीमा को भी लगा था कि वो जीत गया, और उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बेचारे का जान चला गया। तुम भी वही गलती कर रही हो। बंदूक कमजोर लोग चलाते हैं, समझदार लोग दिमाग चलाते हैं। रानी भारती एक एक कर हम सबको मार देगी। किस तरह देखते हैं इसे? अभी जिस तरह लोकसभा इलेक्शंस भी आने वाले हैं और आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शंस भी होंगे जम्मू कश्मीर में, तो क्या कहेंगे इसे? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि इलेक्शंस दरकिनार, लेकिन मोदी जी के साथ जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को एक खास किस्म का जुड़ाव है, एक खास किस्म का स्नेह मोहब्बत। और ये अब से नहीं, आरंभ से ही। मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने तब भी अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में चुनावी अभियान जम्मू कश्मीर से ही प्रारंभ किया था, माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेक करके। उसके बाद जम्मू कश्मीर में ही प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला प्रमुख कार्यक्रम रहा माता वैष्णो देवी कटरा के रेल स्टेशन का लोकार्पण का। उसके उपरांत जब यहाँ बाढ़ आई तो मोदी जी पहली दीपावली भी यहीं मनाने आए, और आजादी के बाद का सबसे बड़ा पैकेज भी जम्मू कश्मीर को मोदी जी के ही हाथों से मिला। कहने का तात्पर्य है कि मोदी जी ने प्रारंभ में ही कहा था कि जो क्षेत्र देश के विकसित नहीं हो पाए उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए थे, या दूसरे क्षेत्रों की तुलना में उनका विकास नहीं हो पाया उतनी मात्रा में, चाहे उसमें राजनीतिक कारण रहे होंगे या वोट की राजनीति रही होगी, उनको बराबर की सतह में विकसित करके लाया जाएगा, और वो उन्होंने कर दिखाया। उनके आने से पहले यहाँ पर क्षेत्रीय भेदभाव और तुष्टीकरण की राजनीति की शिकायतें रहती थी, वो भी जाती रही। संतुलित विकास हुआ, राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हुई, कभी किसी ने जो कल्पना नहीं की थी वो परिवर्तन हुआ, वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई। कभी किसी ने सोचा था कि वो प्रदेश जहां पर के जम्मू में रेल की पटरी 1972 में पहुंची, 50 साल तक रेल की पटरी आगे नहीं बढ़ पाई, वहां पर आज हम कश्मीर घाटी तक रेल पहुंचाने की बात कर रहे हैं, और दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल जम्मू कश्मीर में निर्माणित होता है, एल्फिल टावर से 35 मीटर ऊंचा। तो ये ऐसी अद्भुत बातें जिसकी कल्पना नहीं थी, जिसका तस्वुर नहीं था, जिसकी मांग भी नहीं थी, आकांक्षाएं और उम्मीदें बुझ चुकी थी, वो आरजू जगाने का काम भी मोदी जी के आने के बाद हुआ है। एक एस्पिरेशनल अर्ज पैदा हुई है जम्मू कश्मीर वासियों, और वो इसलिए भी कि उन्होंने पहली बार जिला परिषदों के भी चुनाव कराए। वास्तविक लोकतंत्र क्या होता है, जमीनी जमहूरियत क्या होती है, उसका एहसास भी उन्हीं के आने के बाद हुआ। पंचायतों के 73 और 74 बैडमिंटन लगाए, और इसलिए यहाँ के लोगों को हमेशा उनसे कोई ना कोई अपेक्षा रहती है। उन्होंने न केवल विकास के स्तर पर जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में लाया है, बल्कि सोच भी मुख्य धारा में लाने का कार्य किया है, चाहे वो अनुच्छेद 370 के जाने के बाद, और एक सामाजिक न्याय देने का काम। यहाँ की बेटियों के अधिकार, यहाँ के वाल्मीकियों के अधिकार, यहाँ पर जनजातियों के अधिकार, या अनुमान कीजिए कि पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों में से 2 व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, लेकिन यहाँ जो शरणार्थी आए उन्हें नागरिकता तक का अधिकार नहीं दिया गया, वो भी मोदी जी ने दिया। तो ये एक निरंतर प्रयास, उनका परिश्रम, निष्ठा, प्रतिबद्धता है, उसका ये नतीजा है कि इस प्रकार का रिश्ता उनका जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ गया है। इस रैली में क्या रहेगा, जो पॉइंट्स क्या रहेंगे, जो मेन
इसमें शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम लगभग 30,000 करोड़ से अधिक राशि को लेकर, उसके अतिरिक्त विकसित भारत का एक बड़ा सफल प्रयोग रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के कोने कोने में, गांव-गांव में घूमी है। जम्मू कश्मीर में तो बहुत ही अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा। मेरे अपने चुनावी क्षेत्र में दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में इतना अधिक उसे रिस्पांस मिला कि अद्भुत। तो वहां के लाभार्थियों के साथ उनका संवाद भी रहेगा, वर्चुअल माध्यम से भी और फिजिकल माध्यम से भी, क्योंकि लोग मोदी जी को देखना चाहते हैं, उनसे सुनना चाहते हैं, और उनके साथ उनकी सेल्फी तस्वीर खिंच जाए और उनके साथ उनको बात करने का मौका मिल जाए तो समझिए उनका जीवन सफल हो जाएगा। हर व्यक्ति इस समय मोदी जी के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहता है। एम्स है, एजुकेशन हब है, ट्रेन है, किस तरह देखते हैं इसका भी इनॉग्रेशन? एम्स, मुझे लगता है कि बहुत केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतर एम्स होते ही नहीं है, और राज्यों में भी एक होता है, यहाँ 2 है। ये इस बात की प्रामाणिकता है कि कितनी प्राथमिकता मोदी जी इस प्रदेश को देते हैं। बाकी थोड़े ही फासले के दायरे में IIT, IIM और इस तरह का इकोसिस्टम जो शिक्षा को लेकर के बना है, वो भी बहुत कम देखने को मिलता है देश में। और इसके अतिरिक्त उद्योग रोजगार को लेकर के अरोमा मिशन, पर्पल रेवोल्यूशन अथवा बैंगनी क्रांति, उसका जन्म भी जम्मू कश्मीर से हुआ, जिसका उल्लेख मोदी जी ने मन की बात में किया। कठुआ जैसे कस्बे का उन्होंने जिक्र किया। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर उसकी झांकी, उसके टैबलो को भी दर्शाया गया। तो जम्मू कश्मीर ने जिस प्रकार से एक स्वाभिमान जागा है और अपने अंदर एक आत्मविश्वास जागा है कि हम भारत की मुख्य धारा में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ योगदान कर सकते हैं, ये भी मोदी जी के ही प्रयास से मुमकिन हुआ है। तो सर, लोकसभा इलेक्शन भी नजदीक है, तो क्या इस रैली को देखा जाए कि एक शुरुआत है इलेक्शन? नहीं, मोदी जी का तो जम्मू कश्मीर में सदा आना रहा, इलेक्शन हो कि ना हो। और जैसे आज पूर्वोत्तर को मोदी जी के डेवलपमेंट मॉडल की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है, इसी तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर के मोदी है तो मुमकिन है की मिसाल दी जाती है। कभी किसी ने जो सोचा ना था कि 370 हट जाएगा, कभी किसी ने सोचा ना था कि ये विकास के कार्य यहाँ आएंगे। आरक्षण में क्षेत्रीय भेदभाव इस कदर के LOC में 4% आरक्षण था, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं था। युवाओं के भीतर भेदभाव किया जाता था राजनीतिक कारणों से। उस सब को जो मोदी जी ने समाप्त किया है, उससे उनकी एक विश्वसनीयता बनी है। अब इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर के हैं, तो क्या वो भी एक्सपेक्टेड है जल्दी? नहीं, वो उसके लिए तो मैं अधिकृत नहीं, बात करने को तो चुनावी आयोग करेगा, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सदा हर चुनाव के लिए तैयार रहता है। सर, एक जिस तरह राजनीति चल रही है, जैसे कमलनाथ है, उनका भी ये है कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या कहेंगे? और वहीं यहाँ जैसे लोकल ये भी आ रहा है, नेता कह रहे हैं कि एनसीबी बीजेपी के साथ बात कर रही थी 2014 में। मैंने जैसे कुछ समय पहले ये कहा था कि हमारे विपक्षी दलों के जो नेता राजनीतिक कारणों से मोदी जी का विरोध करते हैं, वो ये नहीं जानते कि अगर वो घर के पिछवाड़े में देखें तो उनके अपने परिवार के सदस्य भी मोदी जी को ही वोट डालने वाले हैं। तो ये लगता है कि जैसे एनसी की बात आ रही है कि बातचीत कर रहे थे बीजेपी के नहीं, साथ, वो अब उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें आगे के सफर की तरफ नजर रखनी है। IIM जम्मू सारे IIM फैमिली में सबसे छोटा IIM है और देश में काफ़ी IIM जम्मू प्रगति कर रहा है। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी और कल माननीय प्रधानमंत्री जी इसको उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। इस चीज़ के जानते हुए हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, स्टाफ, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और शिक्षा मंत्रालय जो है और प्रधानमंत्री का जो है काफ़ी फोकस रहा है जम्मू कश्मीर पे और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस पे। जम्मू पूरे भारतवर्ष में ही एक पहला शहर है, एक ही शहर है जिसमें कि IIM, IIT और एम्स है, और हम तीनों लोग जो हैं एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ये मंत्रालय इस चीज़ को जानते हैं और वो काफ़ी इस चीज़ से खुश हैं कि ये तीनों इंस्टीट्यूशन जो आपस में काम कर रही है। हम यहाँ के समाज की उन्नति के लिए, जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए हम काफ़ी काम कर रहे हैं कि अल्टीमेटली जब तक देश तभी ग्रो होगा, 2047 में हम एक विकसित भारत की बात करते हैं,
तो विकसित भारत तभी होगा जब यहाँ पे सारे प्रांत और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो डेवलप होंगी। हम सबों की पूरी कोशिश है कि हम यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर का, उसको बढ़ाने में कैसे सहयोग दें। मैन पावर से, नॉलेज से, टेक्नोलॉजी से, जिस भी तरह से संभव है हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में कंट्रीब्यूट करें और यहाँ के समाज को, यहाँ की यूनियन टेरिटरी को आगे कैसे ले जाए, हमारी ये अपेक्षा है और हम लोग कर रहे हैं। देखिए, लोकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो है कि वो यहाँ पे हमारे पीएचडी प्रोग्राम में, एमबीए प्रोग्राम में, डुअल डिग्री प्रोग्राम में, आईपीएम में, सब में आ सकते हैं। लेकिन हमारा फोकस है, हमारा जो विज़न है कि हम जो है ग्लोबल लीडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आए। हमारे पास सेंटर फॉर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप है। हम लोगों ने काफ़ी सारे सेंटर्स खोले हुए हैं। सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, सेंटर फॉर स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, और सबसे बड़ा यूनिक सेंटर है आनंदम, द सेंटर फॉर हैप्पीनेस। तो ये 4 सेंटर के माध्यम से हम ये यहाँ के भी जो लोकल्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सबों को ये काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। और यहाँ पे हमने काफ़ी ट्रेनिंग दिए हैं यहाँ, और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम जो अपने इंक्यूबेशन सेंटर में है उसमें यहाँ के लोकल्स को हम काफ़ी सपोर्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि सेंटर फॉर स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट में हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्मॉल सेंटर बना रहे हैं, SBDU, स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स बना रहे हैं। और वहाँ पे जो भी लोग बिजनेस में आना चाहते हैं तो हम उनको जो है गाइड करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। सो दैट इज़ द बेसिक फोकस। सो वी आर फॉर द नेशन बिल्डिंग एंड वी आर हेयर फॉर जम्मू एंड कश्मीर बिल्डिंग। सो दैट इज़ व्हाट इज़ आवर मोटो इज़। थैंक यू। अभी जो है हमारे पास जो है करीब 1000 बच्चे हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं, और जैसा कि अल्टीमेट इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो 2400 होगा। ये फुल्ली रेजिडेंशियल कैंपस है। जैसे एयर कंडीशन इन्वायरमेंट है पूरा, हॉस्टल सारे एयर कंडीशन है, सिंगल बेड हम प्रोवाइड करते हैं। फैक्ट जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं, जो स्टाफ है वो यहाँ पे रहते हैं। और बिल्डिंग आपके सामने है, ये पूरे हिंदुस्तान में एक यूनिक बिल्डिंग है। और आने वाले समय में हम तो कहते हैं कि हम तो माता की गोद में बैठे हुए हैं, माता के चरणों में बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जब हम सुबह होती है तो माता के दर्शन से होती है, और शाम भी होती है तो माता के दर्शन से होती है। तो हम लोग तो बहुत ही लकी हैं। और हमारा नेवर IIT है, तो हम लोग दोनों आपस में काम कर रहे हैं। एम्स से हम लोग आपस में काम कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की यूथ को बेनिफिट हो। इसके लिए हम सेमिनार हो, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट करें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लोगों को, बाहर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि वो आम जम्मू में आएँ, कैंपस में आएँ, जम्मू को देखें। जब वो आएंगे तभी उनको जम्मू और कश्मीर के बारे में मालूम होगा। यहाँ पे आप लोगों को मालूम है कि श्री माता वैष्णो देवी में हर साल करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। उसमें हर तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, सब लोग होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो उनके लिए हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह हमारा श्रीनगर में ऑफ कैंपस है, वहाँ पे हम श्रीनगर में भी काफ़ी हम काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी हमें श्रीनगर शहर में हमें जगह दिया है, तो वहाँ पे भी हम अपना कैंपस बनाएंगे। और हम लोग भारत सरकार और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को वी आर थैंकफुल टू देम कि उन्होंने यहाँ पे 200 एकड़ का ज़मीन दिया और इस कैंपस को बनाया। दिस इज द मोस्ट आइकॉनिक कैंपस इन द कंट्री। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। आप यहाँ पे लाइब्रेरी में जाएं और लाइब्रेरी का फोटो लें, आप वीडियो लें, आप और सारी दुनिया को दिखाएं। ऐसी लाइब्रेरी जितने भी लोग आए हैं उन्होंने कहा है कि इट इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। हिंदुस्तान में इस तरह की लाइब्रेरी नहीं है। लेकिन वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में और आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि सब लोग यहाँ पे आएँ, और अगर हम IIM जम्मू अगर उनके लिए कुछ भी कर सकता है, then we'll feel more than happy to do and provide our services. Top of that, these institutions will attract the investment in J&K.
देखिए, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, जो टॉप मैनेजमेंट के जो कोर्सेज होते हैं वो तो यहाँ पे रहेंगे ही। लगभग 1200 स्टूडेंट्स की यहाँ पे स्ट्रेंथ होगी हमारे कैंपस में, रेसिडेंशियल स्ट्रेंथ हमारे यहाँ पे रहेगी। और एमडीपी और अलग अलग कोर्सेस उसके माध्यम से श्रीनगर में चलेंगे। उसके बाद में हमारा जो ओल्ड कैंपस है जम्मू में, वहाँ से चलेंगे। तो बिल्कुल स्टूडेंट, प्रोफेसर्स, फैकल्टी, टीचिंग, नॉन टीचिंग ऐसे मिला के लगभग 3000 के आसपास की कैपेसिटी जो है वो हमारी रहेगी। Your doubts, your fears, your challenges. One thing that wins over them all, that's your shine. Your shine that's within makes you who you are. So let your shine through. You are gold. मैं राघव रैना, मैं देवका नगरी का एक युवा बोल सकते हैं मुझे। तो आज हम देवका नगरी में ही खड़े हुए हैं। देवका नगरी की जो आप बोल रहे बात क्या हुई है, देवका नगरी में जो सरकारों द्वारा जो काम किए गए हैं उसका मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, जो जब हर साल आते हैं, जो अभी 20 तारीख को भी आने वाले हैं, अब वही हमारे लिए बात रह गई, छिपा रह गई कि हमारे लिए नया तोहफा क्या आएगा। अब वो उस बात को पहले हम साइड पर रखें, अभी बात करते हैं देवका नगरी के लिए। अब अब हमारे जो नगरी में ही बात चल रही है कि देवका में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। काफ़ी कुछ हुआ है। जैसे आप पहले देख सकते थे, पहले यहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल था। जंगल कटवा के अभी नया यहाँ पे बैठने की सीटिंग अरेंज की हुई है। यहाँ पे बहुत, यहाँ पे हम कॉलेज से आते हैं, बड़े युवा यहाँ पे बैठते भी हैं। और जो भी अगर यहाँ का जो इन्फ्लुएंसर का काम किया जाता है, यहाँ यूट्यूबर्स के लिए कोई शो किया जाता है, उसके लिए स्पेशल ओपन थिएटर वो किया हुआ है। वहाँ पे आप ओपन थिएटर बैठ सकते हो। कुछ बुजुर्ग लोग आते हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं। अब शाम को आप देख सकते हो, शाम को काफ़ी बुजुर्ग लोग जो आते हैं यहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि पहले हम लोग डरते थे कि भाई देवका में एक टैक हो जाए, अंधेरा, काफ़ी अंधेरा होता था। और यहाँ पे लाइट की सुविधा बहुत अच्छी की है, बैठने की सुविधा बहुत अच्छी की है। और सबसे बड़ी बात, मैं डीसी मैम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इस बार वापिस उन्होंने देवका का साफ करने का उनको भी मौका मिला है, क्योंकि देवका माता को उनको भी मौका मिला है साफ करवाने का। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी से मैं ये बता था कि इस बार तोहफा लाएंगे जल्दी से। हमें एक एक्साइटमेंट हो रही है कि नया तोहफा हमारे लिए क्या आएगा। देखो 2014 से पहले की बात किया जाए तो उधमपुर को कोई पहचानता नहीं था। जिस हिसाब से मेरे को देखना है, उधमपुर को कोई, जो इस 2014 के बाद सरकार के बाद जो ये सरकार आई है, तो उधमपुर के लिए अगर उन्होंने कुछ किया है, अगर जितना भी किया है, मैं बोलूँ जिसने लगाया नहीं है, अगर उन्होंने लगाया तो हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। उन्होंने लगाया है, जितना भी लगाया, हम उसके करोड़ों पे आए, जितने भी आए, हम उसको साइड पर, क्योंकि काम किया है तो हम तभी बोल रहे हैं। काम तो किया ही है तभी। अब सांसद जी का, हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो उन्होंने वंदे भारत ट्रेन के लिए भी थोड़ा वो किया था, स्टॉप बनाया, कठुआ स्टॉप बनाया, उधमपुर स्टॉप। उनके तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उधमपुर के बारे में कुछ सोचा। सर सबसे पहले तो मेरा नाम रोहित कुमार अत्री है। मैं बेसिकली ब्लॉक गोडी का रहने वाला हूँ, जो कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।
तो मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट BSc 4 सेम का स्टूडेंट हूँ डिग्री कॉलेज उधमपुर में। तो जैसे कि मैं डेली यहाँ से अप डाउन करता रहता हूँ देविका रिवर से, तो आई थिंक मैंने 2021 से मैंने यहाँ पे मतलब अप डाउन करना शुरू किया था। तो बड़ी सारी चेंजेस जो है, बड़ी सारी चेंजेस मेरे को देखने को मिली हैं इस देविका रिवर को, मतलब देविका जो भी है हमारा पार्क वगैरह है, तो बड़ी सारी चेंजेस मेरे को देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे पहले जब मैं आता था तो बड़ा सारा मतलब कोई भी रास्ता वगैरह चलने को नहीं होता था, तो अभी डेवलपमेंट बड़ी ज़्यादा हुई है। तो बाकी देविका रिवर पहले तो बिल्कुल भी पोल्यूटेड हो चुका था, लेकिन अब उसके बाद बड़ी सारी उसमें जैसे कि बड़े क्लीननेस ड्राइव वगैरह चलाते रहते हैं, बड़े सारे स्कूल्स यहाँ पे आते रहते हैं, तो वो जहाँ पे एवरी वीक एवरी मंथ वो आके यहाँ पे सफाई वगैरह जो है करते रहते हैं। बाकी यहाँ के जो वर्कर्स हैं तो वो भी देविका को क्लीन करने में बड़ी ज़्यादा हेल्प वगैरह करते रहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये हमारा रिलीजियस प्लेस है एक देविका, और वो इसके मतलब जो फंडिंग वगैरह करते हैं उसके जो हमारा रिलीजियस प्लेस है उसके लिए ये फंडिंग वगैरह कर रहे हैं। और हम भी इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे इस रिलीजियस प्लेस को जो भी मतलब स्पष्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, आपने मेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। मेरा नाम फिल्मो देवी है, मैं बेसिकली बदौता की रहने वाली हूँ, अब इधर चबूतरा चौक में रह रही हूँ। और जब मैं पहली बार आई थी तो इधर मतलब देखने का भी मन नहीं करता था, इतनी अच्छी नहीं बनी थी देविका, और काफ़ी डरावनी जगह भी होती थी, चलने के लिए रास्ता नहीं होता था, और बहुत पोल्यूटेड एरिया था ये। तो पहले से तो काफ़ी चेंजेस आए हुए हैं इधर, मतलब बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन हुआ है इसका, और आने वाले टाइम पे इधर टूरिस्ट भी आएंगे, और मतलब काफ़ी अच्छा ही हुआ है, मतलब काफ़ी चेंजेस हो गए। अब बैठने के लिए भी अच्छी जगह है, पार्किंग भी बन गया। बिल्कुल मेरे को लगता है कि मतलब इकोनॉमिक भी इधर बहुत ज़्यादा वो होने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छी जगह और इधर हर चीज़ है। मतलब पहले से तो काफ़ी डेवलप हुआ है इधर, अब बैठने का भी मन करता है। मैं तो उनका तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी उन्होंने वो किया, इतना अच्छा कर दिया इसको। और तारिक्षा उधमपुर से आज 10 साल के इस पूरे टेन्योर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी देवक मैया की काया पलटी है, देखने के काबिल है। आज यहाँ पे काफी ज्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। भगवान शिव की प्रतिमा यहाँ पे आप देखिए किस तरह से है, और इसके साथ साथ ब्यूटिफिकेशन खूबसूरती भी देखने को बनती है। देवक की सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ आए हुए श्रद्धालु जो हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे आते हैं देवक मैया के दर्शन करने के लिए। तो हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पे 20 को इनॉग्रेशन करेंगे, तो इसके साथ साथ उधमपुर की डेवलपमेंट के लिए और भी इंतज़ाम करेंगे, जिसमें हमारा उधमपुर में कोई फ्लाईओवर बन जाए, पार्किंग का व्यवस्था यहाँ पे बन रही है। मैंने पहले कहा देवक तो देखने को बनती ही बनती है, लेकिन डेवलपमेंट की एक लहर जो है उधमपुर में डॉक्टर जितेंद्र जी के यहाँ रहते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ रहते हुए 10 साल में काफी ज्यादा डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। संस्था ने काफी ज्यादा देवक के लिए बात की है, लेकिन इन 10 सालों में देवक की काया पलट गई है। और भी अगर यहाँ पे डेवलपमेंट होती है तो रोजगार के साधन बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए इन 10 सालों में देवक जो पहले 10 साल पहले देवक जो थी एक नाले की शक्ल में थी, आज एक टूरिस्ट प्लेस की शक्ल में देवक बन चुकी है। काफी ज्यादा लोग यहाँ पे शाम को बैठ